Assalamu alaikum and good noon to all the beloved viewers of JK Sports Time from across the globe and from the valley of Kashmir. And we'd like to apologize from our side. We had issues with our technical team. Now we have been able to redress the grievances in time. In the meantime, Hashim comes on the ball. The next one, beauty. That is a peach from this man, Hashim Watson. Wonderful delivery and scare him up, beaten him on that occasion. Wonderful delivery. Holiday Cap, he won the toss and their captain straight away decided to bat first. Nazir. जी बिल्कुल और बेहतरीन प्रदर्शन से बीच मैदान में हालांकि आदिल काचरू और उनके साथ शब्बीर जो कि इस समय प्रारंभिक जोड़ी और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 बगैर नुकसान के आकर्षक और विश्वसनीय शुरुआत बीच मैदान में जहां तक हॉलिडे कैफे की टीम का सवाल है। Well, exactly, no doubt about that. Adil Kachru is out in the middle alongside him. Shabir, these are the two openers. Abid Nabi bowled the very first over. That was expensive, conceded 14. He's going to be in his over number 2 and this is over number 3. And that's another biggie. And that's gone all the way. And that's gone almost onto the road. Huge hit of extra cover. 6 more. And that 6 takes the score to 27. Look at that. Once again, half volley. Asking the batsman to go hard at it. So does the batsman. And he says, thank you very much. I'm going to pack it to perfection. 6 more. जी बिल्कुल और दर्शनीय स्ट्रोक कहना चाहिए जगह मिली वहां पर और उसको निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 27 रन 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद सभी फीवर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और जुड़ जाइए हमारे साथ। एक बहुत बड़ा मुकाबला इस समय अमर सिंह कॉलेज के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में यह मुकाबला चलता हुआ और आदिल काचरू और शब्बीर की जोड़ी बीच मैदान में और गेंदबाजी का दायित्व आबिद नबी के पास। Well, Abid Nabi is bowling well. Lost the ball. We have to bring the new ball. We need a new ball here at this very crucial juncture. Well, you see the way the two batters are going, they're going hard at the bowlers. And the bowlers are also providing some half volleys, some width on offer, and that's why batters are packing every ball to perfection. And look at the 2 stars of the valley. Shabir alongside him, his colleague Adil Kachru, the household names of the valley. And the big thing about this very match is Shahbaz Ahmed is playing in this very match, was represented and has played for Royal Challengers Bengaluru. He's an IPL sensation and is playing here at Srinagar, this very beautiful sports stadium of Amar Singh College, and we can also say that he's the power of Team Hooker. जी बिल्कुल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस समय इस मुकाबले में खेल रहे हैं टीम हुकट श्रीनगर के लिए। इस बार ये गेंद हालांकि लेग स्टंप पर गेंद उनके शरीर पे जा लगी। हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ तीसरे ओवर में 28 बगैर नुकसान के आदिल काचरू और शब्बीर की जोड़ी समय बीच मैदान में और गेंदबाजी का दायित्व आबिद नबी के पास। आकर्षक मुकाबला और कहना चाहिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोनों बल्लेबाज। हालांकि वहां पर अगर गेंदबाजी की बात की जाए ऑफ स्टंप पर लगातार थोड़ी सी जगह देते हुए बल्लेबाज को, जिसके चलते बेहतरीन स्ट्रोक देखने को अब तक मिले हैं। इस ओवर में अगली बार आबिद नबी उस छोर से उनकी यह गेंद और इस बार सीधे बल्ले से खेला। बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और दर्शनीय स्ट्रोक और स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन तीसरे ओवर में। इस समय आदिल काचरू के बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन स्ट्रोक। Well, no doubt about that. That is a wonderful short play back to the ball and down to the long on boundary. 4 more runs. And that boundary takes the score to 32 for none. We are in over number 3. We are halfway down in over number 3. And look at this man who is sending the ball out of the park. And that was stylish copybook and proper cricketing stroke on that occasion from Adil Kachru. He goes to 5-8 balls. Next ball coming up. And this time, Vertebray, supple wrist comes into play and down towards the backward skill. Are they going to come back for the second? Yes, it does in the end. They made it with ease. 2 runs added to the tally. 34 for none. We are in over number 3 of the match. Abid Nabi is conceding too many runs up front. He has conceded 27 so far. As a sensational cricketer from Valley has conceded 27. I think it isn't his day today. He is conceding runs, but he has to be circumspect. He has to bowl in the right areas. Shahid Hamid and Mudassir and Nisar Ahmed. Thank you all the beloved viewers. And on that occasion, goes right behind the ball, off at the bat pace, and cover that swing of the ball and keeps it down towards the backward a point. No run there. It's a dot ball. So no harm done. Score man static for the loss of no wicket. We are in over number 3 of the match. Abid Nabi has conceded 27 so far in this very match. Nazir, look at the field once again. First slip, second slip, then followed by backward a point, Swedish point, short extra cover, Sillier cover, and made off in place on the offside. Oh, beautifully ball, yorking him up on the occasion, and he digs it out back to the ball. No run there, 3 down. It's 34 for none. The vital toss won by team
Holiday Cafe captain, and he decided to bat first in this very match, and they want to put score on the board. And those who want to know the playing 11, it is coming your way through JK Sports Time, and you can see on your screens right now. It is displayed on the big screen who are the guys who are playing for both the teams. But Nisar writes in, Mohsin Manzoor and others, thank you for your love. Arif Kasana and others are watching this very wonderful coverage. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, followed by Fashion Fiesta, Anthem Sports India, Shining Star Pampur, and MHM multi-fashion brand, and Koshur and others are watching this wonderful coverage. Nazir 3 done is 34 for none. What a match! And for our beloved viewers, for their kind information, today we got the star, the IPL sensation, Shahbaz Ahmed is playing for Team Ukut, and this is a great sort of an opportunity for the guys of the valley to look at this man today. Keenly watch JK Sports Time and find out how he is playing, and you will definitely learn some new tactics how to carry on. जी बिल्कुल। और एक बड़ा अगर हम बात करें इस मुकाबले की, बड़ा मुकाबला है, और ऐसे में आईपीएल के जो स्टार हैं इस समय इस मुकाबले में खेल रहे हैं। जैसा कि आपको हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने बताया कि नदीम अहमद इस मुकाबले में खेल रहे हैं टीम मोहकड श्रीनगर की ओर से। और इस समय अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कुल होगा इसमें 34 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए स्वागत करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद लीजिए। आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, और शब्बीर आदिल काचरू की ये मान्यता प्राप्त जोड़ी समय बीच मैदान में प्रारंभ कर चुकी है। 3 ओवर में 34, और एक बार फिर गेंदबाजी वहां पर संभवतः कहना चाहिए हाशिम के पास, और हाशिम अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद जगह दी। हालांकि लेग स्टंप पर उसको मोड़ा जरूर, पीछे है खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 35-3.1 के बाद बगैर नुकसान के। आकर्षक मुकाबला हाशिम गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए आदिल काचरू और शब्बीर की जोड़ी समय हॉलिडे कैफे की ओर से प्रारंभिक जोड़ी के रूप में। Well, Holiday Cafe are batting first. They're 35 for none. We are in over number 4. It is Shahbaz Ahmed who is representing Team Ukut today. After wicketkeeper, there is slip in play, so that's a good ball. Right hand man on target, and he goes right behind the ball. Playing it back to the ball. Won't be any runs. Score remains 35 for none. We are in over number 4 of the match, and we'll have to wait and watch. Somebody writes in. It is Saibat and UV and others here, Mudassir, and thank you for your love and support. Keep joining the live broadcast of JK Sports Time. This time around we're live from Srinagar wonderful stadium. This is named after Amar Singh College, and that has been that was spraying down the leg side, way down the leg side. Wicketkeeper doesn't hold on to that one. That flies all the way down to the long star. 5 runs, 5 gifted runs, and there is addition in the tally. Score moves to 40 for the loss of no wicket. We are in over number 4 of the match. Nazir, you have to be circumspect. You have to maintain that discipline with the ball, and you have to make sure that you bowl in the right areas, in that corridor of uncertainty. Look at the pace from Watson, and it will be better to bowl in that corridor of uncertainty, and you can really irritate the batter. जी बिल्कुल सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी। इस बीच ये गेंद हाशिम की, हालांकि लेग साइड में हल्के से उसको फ्लिक किया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की, और संभवतः गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम होती है जब तक उसको फील्ड किया जाता। दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तो 2 रन और खाते में जुड़ते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। शब्बीर इस समय 28 पे नाबाद 8 गेंदों का सामना किया, और वहीं पे आदिल की बात करें 13 गेंदों से अभी तक का संभवतः 9 रन बनाए हैं। और जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं संयम और आत्मविश्वास के साथ, और शायद इसी की आवश्यकता है प्रारंभिक जोड़ी को। एक बार फिर हाशिम उस शॉट से उनकी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल, अच्छी गेंद हालांकि उछाल लेती हुई उपेक्षा से ज्यादा उछली। Look at that Hashim Watson once again teasing, kind of a sledging there, and you might have covered that very match at Shalabuk, and once again he replicating that what he did there, and look at that. Doing like this, and this is what he is replicating what he did at Shalabug some days back, and score is 42 for none. We are in over number 4. जी बिल्कुल, क्रिकेट का ये बाग है, और उसी एक बाग के साथ इस समय बहुत ही अच्छा वातावरण, और कहना चाहिए बेहतरीन मुकाबला दर्शनीय इस समय पारी चलती हुई। इस बार अच्छी गेंद खेला, गेंद सीधे वहां पर हाथ में। Wicket number 1. The first blood is on in the form of Adil Kachu, the man on song today, but has been sent to packing. Beautiful delivery, and Hashim Watson, you beauty, and the man Shahbaz Ahmed, the man who hold on to the catch, and there goes wicket number 1, brilliantly held. And look at that, it was
at a tremendous pace coming to the fielder, but he does well holding on to that one. And my colleague in the com box is smiling. Everyone is smiling around the park because IPL sensation has hold on to that one. There goes wicket number 1. First blood is on, and Kachru doesn't last today. He wasn't unable to prolong his innings. He has been sent to packing. जी बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा देती है वहां पर आईपीएल क्रिकेटर, और बहुत ही बेहतरीन वो शॉट थे जिस प्रकार से उन्होंने कैच किया, और कहना चाहिए आकर्षक मुकाबला, लेकिन आदिल काचरू को किया चलता हाशिम द्वारा। आकर्षक मुकाबला, और इस समय स्थिति 42 पे 3.5 के बाद आकर्षक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बने हुई, और मुकाबला बीच में चलता हुआ अमर सिंह कॉलेज का ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम बीच मैदान में इस मुकाबले का नेतृत्व करता हुआ। Well, score is 42 for the loss of 1. We have seen the back of one of the batter, that is Adil Kachru, the big man. Nazir, you have to focus on this very game, and Holiday Cafe won the toss, and their captain, without any hesitation, decided to bat first. They're 42 for 1. We are in over number 4, and that brings to the crease the newcomer, namely Shahid walks into the middle, and somebody writes in, Arshid and Mudassir, Yunus and others are watching this wonderful coverage, and Shiraz Ibn Manzoor and Bashir Ahmad Sheikh. Thank you all the beloved viewers. Thank you for your love and support. Somebody right, he's feeling at first slip, and he is the man who took that blinder, that beautiful catch of the outside edge of Adil Kachru. And somebody right, thank you Sarkar, we'll do that in a while from now when we get a kind of a breather here in the com box. Score is 42 for the loss of 1. Last ball coming up, Hashim Watson among the wickets straight away. Second lost ball up the outside edge. It was aerial to be precise, and it was in the air, but it dropped short of the back at a point, so no harm done. Score remains 42 for 1 after the completion of overs. 4 done, 42 for 1. जी बिल्कुल, और आदिल काचरू 9 रन बनाकर 15 गेंदों से पवेलियन लौटे। हालांकि शब्बीर इस समय 28 में नाबाद 8 गेंदों का सामना किया, और नए बल्लेबाज को अभी अपना खाता खोलना है शाहिद का। एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करना चाहेंगे, जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए हमारे साथ इस आकर्षक मुकाबले में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग इस मुकाबले का आनंद ले सके, क्योंकि आईपीएल सेंसेशनल इस मुकाबले में खेल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के युवा क्रिकेटर्स के लिए। Well, exactly. This is a kind of a great move. This is a kind of an improvisation, and one has to give credit to the team hooker for bringing this man here, the IPL sensation. He used to play for Royal Challengers Bengaluru, and he is here today operating for the first time. He has been given the ball. Mir Mohammad Akif, thank you for your love, and Tawsif Rishi and Mir Tanveer, all the beloved viewers, thank you for joining us here on JK Sports Time this time round. And Shahbaz Ahmed will be bowling. On strike will be Shabir. Shabir is unbeaten on 20 out of 8 balls. An innings, unbelievable. He has really announced himself here, and he's going all guns blazing, Nazir, and he has sent the ball out of the park, that too against the likes of Abid Nabi and others. And let's wait and watch. Thank you Kasana, thank you Maghrib Makbul, Jeffrey and others, thank you for your love and support. 42 for 1. We are in over number 5 for the first time. IPL sensation will bowl. It is going to be over number 5. Shahbaz Ahmed will be bowling, and is designing and manipulating the field on either side of the track. Khani Ashraf, you are getting the update through JK Sports Time. Keep watching on your screen, it will be displayed in a while from now, the playing 11 above the teams. In the meantime, Shahbaz Ahmed for the first time will operate. First ball of his pressure, beautifully bowled. Look at that one, wonderful delivery. Beaten all ends up, and batsman gazing at the bowler straight away, but he can't do very much. That was a wonderful delivery, unplayable one. Beaten all ends up. Wicketkeeper does the well. He is standing right behind the sticks. No harm done. 42 for 1. जी बिल्कुल, और इस समय बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि परिवर्तन के तौर पर शहबाज को लगाया गया है, और पहली ही गेंद से उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिया। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। एक बार फिर सामने शब्बीर है संभवतः, और सामना करने के लिए तैयार। इस बार पहले अगली गेंद को उठाया, गेंद है हवा में, नीचे खिलाड़ी लेकिन उनकी पहुंच से बाहर, और गेंद संभवतः निकल गई सीमा रेखा से बाहर। लेकिन कहना चाहिए एक समय में ऐसा लगा रोक लिया है वहां पर, और तब तक संभवतः तीसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, और जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम। निश्चित तौर पर यह पारी का 5वां ओवर प्रगति पर, और अब तक करीब करीब 45 रन बना लिए हॉलिडे कैफे की टीम ने। आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। हालांकि एक मात्र विकेट अभी तक का हाथ लगा है टीम होकर श्रीनगर का, और आदिल काचरू को उन्होंने पवेलियन वापस भेजा। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल मिड स्टंप पे आती हुई उसको खेला सीधे अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया बगैर किसी रन के। Well bowled, and equally to the task. Batsman playing it back to the bowler Shahbaz Ahmed. Third time comes into bowl.
comes on to ball, and that's a good shot, driven handsomely, but straight to mid-off. Little sloppy field there by the fielder, but to no avail, just a single. 46 for 1. We are in over number 5 of the match. Shahbaz Ahmed is bowling. He lured the batsman into that drive. That was aerial in the air, but the fielder doesn't manage to get underneath the ball. In the meantime, both the batters fetch 3. Next ball coming up, which will be ball number 5. Shahbaz Ahmed comes on to bowl with one slip in place. Look at that once again. Ugly swing once again. He but misses the line of ball completely. There is a slip in place. There is a backward point. There's cover point. There's Celia cover. There is a mid off in place. Long on in place. Mid wicket drops down to the boundary. And this is the field set for those ugly shots. In comes bowler. Last time. Oh, beautifully bowled. And nudges it into the onside. We'll get a single nonetheless. And that's it. Score moves to 47 for the loss of 1 after 5 overs. And Shahbaz Ahmed bowled the very first over, conceded just 5 runs off his very first over, and that tells how sensational he has been, how terrific he has been with the ball. He has just conceded 5 runs, and he had nearly provided his side with a much needed breakthrough, but the fielder doesn't try his level best. He let it go through down towards the extra cover area. जी बिल्कुल, और बेहतरीन शुरुआत की है उन्होंने पहले ही ओवर से। इसमें कुल जो है 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 विकेट के नुकसान पे, और शाहिद इस समय 1 पे नाबाद 3 गेंदों का सामना किया। शब्बीर इस समय 32 पे नाबाद 12 गेंदों का सामना किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाशिम को संभवतः वहां से लगातार गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया है, और कप्तान ने उन पे विश्वास जताया है। देखना है अपने कप्तान के विश्वास पे कितना खरा उतरते हैं। आकर्षक मुकाबला। हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे, बहुत बहुत आभारी। पूरी जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम बने रहिए हमारे साथ, इस मुकाबले का आनंद लेते रहिए। इस ओवर में अगली बार इस बार दुविधा की स्थिति, हालांकि पहले खेलना चाहते लेकिन अंतिम समय में हम अपना इरादा बदला, गेंद की गति में वहां पर कमी की और निश्चित तौर पर फील्ड हुई बगैर किसी रन के। 47 5.1 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। Well, Hashim Watson is bowling, has conceded 15 and picked up a wicket, and let's wait and watch how he's going to operate. Ayaz Ahmed, Innocent and Irfan is here. All the beloveds, thank you once again. Watson comes on to bowl the next one. Oh, pitched in short, pulled it back, down towards the mid-wicket, fielder there. He gives up the chase, gets to the ball, puts in a kind of a hop drive and stops what could have been a boundary and limits the scoring down to single. Score moves to 48 for the loss of 1. We are in over number 6. Thank you, Abdul Wahid and others. जी बिल्कुल, और इस समय गेंदबाजी का मोर्चा हाशिम संभाले हुए, और कुल योग है 48 1 विकेट के नुकसान पर। शब्बीर और शाहिद की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई। पारी का ये 6ठा ओवर प्रगति पर 2 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। हाशिम जो कि इससे पूर्व एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं, 16 रन दिए हैं इस ओवर में। अगली बार उनकी ये गेंद, और इस बार गेंद को खेला, ऊपरी सिरा लगा, हवा में है गेंद, नीचे है विकेट कीपर, और गेंद सबब उन्होंने लपक ली और दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ, कहना चाहिए धीरे धीरे से अब वापसी करती हुई टीम हुकट श्रीनगर। Well, this is the peril of the pace. Look at that man. He is a wonderful bowler. Credit must be given to Hashim Watson. He is among the wickets once again. Second one under his belt. He has picked up 2 wickets, conceded just 16 runs. And a wonderful bowler he has been. Wonderful and a great athlete from the valley. And look at this man. He has provided 2 big wickets. Up run, 48 for 2. We are in over number 6. Does he look at this man? They're in a hurdle and rejoicing the moment. All the beloved viewers, Sajid Mir, Malik, Yubi and Ratha Sahil and Dafaz, all the beloved viewers, thank you for joining us. This is Caribbean Cricket Tournament coming your way with this wonderful match underway here at the centre. Next man whacks into the middle after the fall of wicket number 2. It is going to be Sohail walks in, and we are seeing the back of second one, the team in hurdle, and the conversation going on, pep talk going on. Everything is going on at the moment. But what's important from the batting side perspective, they have to make sure that whosoever is sent on to bat, he has to make sure that he will bat. He will bat under the certain circumstances, and he will definitely love to play the ball on merit, and he has to make sure that he get his eyes in, then to offer the shots. Score is 48 for 2. Thank you, Chaudhary Sarkar, for your love. You can send in the comments, and we are eagerly waiting for your comments, and you can send us the digital token and coupon of love via digital stars on JK Sports Time. Thank you, Manzoor. Thank you, Mansoor and others for your love. Keep sending in stars, and we are eagerly waiting for your love. It's your support we need badly, and Gawar Ahmed and others, thank you for your love. Score is 48 for 2. We are in over number 6. Last over of the mandatory power play coming your way.
बिल्कुल। और लगातार हमारे व्यूवर्स बने हुए साजिद मीर बिजामा से साजिद राथर और बॉट लतीफ के साथ अहमद जुबैर, बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूवर्स का। और एक बार फिर अपने व्यूवर्स से अनुरोध करना चाहेंगे कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ज्यादा इस सीधे प्रसारण को शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग इसके साथ जुड़कर इस आकर्षक मुकाबले का आनंद ले सके। इस समय बीच मैदान में हालांकि 2 सफलताएं मिल चुकी है अब तक टीम हुकट श्रीनगर को 48 पे 2, 5.3 के बाद सुहेल और शब्बीर की जोड़ी समय बीच मैदान में इस गेंद को खेला। हालांकि वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, रन लेने की कोशिश लेकिन नकारा, और रनों की गति में कुर्बुद्दीन स्कोर अभी भी टिका हुआ। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद बहुत ही बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन। हालांकि सभी व्यूअर्स को एक बार फिर उन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे, आज आईपीएल के एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर जो इस मुकाबले में खेल रहे हैं शहबाज अहमद, और एक ओवर की गेंदबाजी भी उन्होंने की और एक बेहतरीन कैच भी उन्होंने लपका था पहली स्लिप में। तो कहना चाहिए एक आकर्षक मुकाबला अमर सिंह काली से सीधा प्रसारण तक पहुंचता हुआ। इस बार सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। स्कोर 48 पे 2, 5.4 के बाद सुहेल और शब्बीर की जोड़ी समय बीच मैदान में, और गेंदबाजी का दायित्व हाशिम के पास। Well, Sohail Thopa is in, alongside him Shabir, and these are the 2 batters out in the middle. Mir Manzoor and others. Thank you for your 48 for 2. We're in over number 6. Last ball coming up. Hashim Watson has conceded 16, so Mir Mohammad Aqib and others. Thank you for your once again. And that's a good ball right on top of that one, playing it back to the bowler, and bowler will come and field with ease. So no harm done. Score remains 48 for 2 after 6 overs. Well, 6 done. They're scoring at the rate of 8 for the loss of 2 wickets after the completion of 6 overs. The very vital toss won by Holiday Cafe side, and their captain decided to bat first. For those who just tuned into the live broadcast, late tuners, the news from the centre, toss won by Holiday Cafe captain, and he opted to bat first. They are 48 for 2. They were going all guns blazing as per Shabir is concerned. The other batters were unable to excel. 48 for 2 after the completion of 6 overs. Well, this broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM multi-fashion branded store. In the meantime, 48 for 2, fresh over begins, and there comes Shahbaz Ahmed once again, IPL sensation. He used it to play for Royal Challengers Bengaluru. That's one of the franchises there in IPL. In the meantime, with one slip in place, there is Star of the Valley, Abid Nabi there at first slip, then followed by second slip almost in place. Oh, beautifully bowled once again, turning away from the batsman, and he wanted to go across the line, and batter is to stay circumspect and let's offer the bat face and try to defend that turn of the ball. बहुत ही बढ़िया अनुभव है इस समय उनके पास। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं बेंगलुरु की ओर से, और इस समय बीच मैदान में गेंदबाजी करते हैं बाएं हाथ से। ये गेंद उसको खेला, गेंद है हवा में, पीछे है खिलाड़ी, गेंद को कैच कर लिया, और क्या there goes wicket number 3, and Shahbaz Ahmed straight away picking up his first wicket, and there goes wicket number 3, 48 for 3, Holiday Cafe, and that was a bad ply being used by the man in form, man on song Shabir, and he was trying to go over his ball, and he was trying to loft him time and again. He was going across the line, shuffling across, but look at the quality of the bowler. I told you earlier that he has to make sure that he play the ball on merit, don't go across the line, and look at that cross bat shot, and the ball blowing up the splice in the air, and the fielder at the second slip almost goes back some 5 yards and holds on to the ball there at fly slip area. There goes wicket number 3. It's 48 for 3. We are in over number 7, and believe me, Nasir, this man is really possessing talent. That's why these guys are making it to the IPL. That is the biggest standard of the domestic level. And then those guys who showcase their talent at IPL, they may surely make their way in the Indian side. It isn't easy for everyone. It isn't everyone's cup of tea. And it takes guts, it takes dedication, it takes a lot of caliber and class. Look at the man. He's possessing class. He's 24 karat gold. And look at his golden arm. He has provided the much needed breakthrough. 48 for 3. जी बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन अनुभव है उनके पास, और अंतरराष्ट्रीय का अनुभव जो इस समय पूरा उस अनुभव का प्रयोग करते हुए और पहली सफलता मिलती हुई उनको इस मुकाबले में। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार असहजता महसूस कर रहे थे शब्बीर उनके विरुद्ध, जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, और गेंद टॉप एज लेती हुई सीधे वहां पर दूसरी स्लिप में पकड़े गए, और तीसरा विकेट गिरता हुआ 48 पे 3, 6.2 के बाद इस समय
रमीज आए हैं नए बल्लेबाज, सोहेल और रमीज की जोड़ी बीच मैदान में। और एक बार फिर अपने व्यूअर से हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे और उनसे अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जो है और ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़ सके। टीम के कप्तान इस समय करीब पर पहुंचे हैं और किस प्रकार से वो यहां से बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। और गेंदबाजी इस समय शहबाज के पास, इस बार मिडल स्टंप पे फेंकी हुई गेंद, खेला जरूर, पीछे है खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और जब तक फील्ड करते थ्रो करते एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 6.3 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। 49 for 3. We are in over number 7 of the match. Holiday Cafe batting first, and Shahbaz Ahmed is among the wickets. He has conceded just 6 runs in his second over. Comes in and bows that one, and driven, handsome looking shot, handsome looking drive down towards the wideish cover, wideish extra cover area, and to be precise, it's wideish mid-off area. We'll get a single nonetheless. 50 comes up in over number 7 of the match. 50 for 3 after batting first again as the likes of Team Hookwood. जी बिल्कुल, और 53 रन बना, 50 रन बना लिए शमा की जगह। इस बार अच्छी गेंद, हालांकि हल्के से इसको सिर्फ बल्ले से टकराने पर दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6.4 के बाद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते इसमें हॉलिडे कैफे की टीम। हुकड श्रीनगर के विरुद्ध आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ और 2 नाबाद बल्लेबाज सोहेल और रमीज जो कि 2 पे नाबाद हैं, 2 गेंदों का सामना किया, वहीं पे सोहेल 1 पे नाबाद। आकर्षक मुकाबला, और अगर वर्तमान रन गति की बात करें तो 7.46। आकर्षक और रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बनी हुई। अमर सिंह का ये खूबसूरत ग्राउंड, अमर सिंह क्रिकेट ग्राउंड, और जहां से ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचता हुआ। बने रहिए हमारे साथ, आकर्षक मुकाबला। और अगर हम बात करें इस बार, इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। इस गेंद को खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी है तैनात, जब तक उसको फील्ड करते 1 रन चहलकदमी करते हुए और 1 रन के साथ ही स्कोर को पहुंचाया 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और कहना चाहिए कि एक यहां से साझेदारी की आवश्यकता है, क्या इसमें सफल हो पाते हैं अथवा नहीं, यह देखने वाली बात होगी। हाशिम मीर 2 ओवर में 16 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए, क्षमा कीजिएगा, 3 ओवर में 16 रन 2 विकेट, और वहीं पे 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया है शहबाज ने। बहुत ही आकर्षक रोमांचक इस समय मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। अंतरराष्ट्रीय कहना चाहिए जो कि आईपीएल स्टार हैं, वो इस मुकाबले में खेलते हुए शहबाज अहमद 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं और कहना चाहिए बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन। To represent a team at IPL standard, then making it to the international standard. It isn't easy. It isn't everyone's cup of tea. It takes caliber. It takes dedication. It takes eternal class. Which is temporary, while class is permanent. It is something which is divine and which is blessed by the mighty Lord. And so you have to make sure that you possess that talent and you showcase that in front of the blood viewers. Score is 52 for 3. We are in over number 8 of the match. First ball bowled with tremendous pace. Peter Noland, the sub-wicket keeper, does the rest in style. No harm done. 52 for 3. We are in over number 8 of the match. 8वां ओवर प्रगति पर की गेंद और इस बार अच्छी गेंद, हालांकि अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करते हैं विकेट कीपर भी चूके और गेंद संभवतः सीमा रेखा की और फील्ड कर ली गई। हालांकि गति खुद ब खुद गेंद की कम होती हुई और वहां पे कहना चाहिए कि 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 7.2 के बाद 54 3 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और एक बार फिर अपने व्यूअर से लगातार अनुरोध करते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच से जुड़ जाइए और इस मुकाबले का आनंद लीजिए। इस बार अच्छी गेंद, खेला जरूर, जब तक उसको फील्ड किया जाता, चहलकदमी करते हुए 1 रन और बने रहिए हमारे साथ इस आकर्षक मुकाबले में ताकि और भी ज्यादा बेहतर से बेहतर सीधा प्रसारण आप तक पहुंच सके। Well, 55 for 3 over twos. Not a good type of feel on that occasion. Well, Soil Yusuf writes in, sorry to say that, 56 for 3. We are in over number 8 of the match. 3 balls done and dusted in this over number 8. And next ball from Riaz Madi. He has conceded 2 runs. Next ball comes and goes. Good ball and equally to the tusk. Oh, that is awkward bounce there at short mid-up with Slayer in position. And nonetheless, they get a single out of it. Score moves to 57 for the loss of 3. We are in over number 8 of the match. And Madi continues to bowl with no slip in place. But he has got fly slip in place, and we can also call it short third man. Then backward a point, cover point, and short extra cover on the offside. And then follow, there is Amir Surma at short extra cover, then mid off, wide-ish in place, long on in place, mid-wicket drops down to the boundary, and backwards Kellag on the boundary. Next ball coming up from Riaz Madi.
and he will have to re-bowl. Once again, batsman wasn't ready. Batsman Ramiz waits for bowler, and that's a wonderful shot. Straight down to a sweeper Kavaria. Will get a single nonetheless. And that's all he will get out of it. 58 for 3. Over number 8 done and dusted. For those who just tuned into the live broadcast, the news from the Suntrays, the vital toss won by Holiday Cafe, and they decided to bat first in this all-important cricket match. And this broadcast is brought to you by Arco Fenestration, Shining Star Pampur, and Anthem Supports India, Fashion Fiesta, amateur multi-fashion branded store. And today's match is all-important because we got too many stars locking horns with each other here at the Sun. We got IPL sensation, the man who played for Royal Challengers Bengaluru, Shahbaz Ahmed, is playing for Team Hooker today here at Amar Singh Sportsfield. And in the meantime, Shahbaz will begin the third over. He has conceded 9 and picked up a wicket. जी बिल्कुल, और अपने कोटे का 30 ओवर लेकर के तैयार, और उनके सामने है इस समय बात करें रमीज, सामना करने के तैयार। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद, अच्छा खासा टर्न लेती हुई गेंद, हालांकि पूरी तरह से वहां पर समझ नहीं पाए गेंदबाज को, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में विराम करती हुई बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में। इस गेंद को खेला जरूर, सीधे बल्ले से पीछे है खिलाड़ी तैनात, जब तक उसको फील्ड किया जाता और संभवतः 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, और 59 पे पहुंचा दिया हॉलिडे कैफे का स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते इस निर्णायक का मुकाबले में। आकर्षक मुकाबला इस समय। शहबाज अहमद जो कि गेंदबाजी का मोर्चा संभाले है, बिल्कुल छोटा बॉल उन्होंने आपका, और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर, पीछे है खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और जब तक फील्ड करके वापस आती 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, कुल योग 60 पे पहुंचाया 3 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, once again, sloppy field there by the backward point fielder, but well, 60 for 3 over number 9 in progress. 11 conceded so far by Shahbaz Ahmed. Next ball, left arm orthodox spinner comes on to bowl the next one, crosses umpire and bows. And that's in there. Will this be out? No, it doesn't. Ball drop short of the fielder there at gully area. This could have been wicket number 2, beautifully bowled and lured him into the drive. That flagy trajectory working for him here, and he was nearly about to castle the batsman, but he survives that very scare. 60 for 3 over number 9 in progress. Shahbaz once again, ball number 5 comes and bows a good ball once again after pitching on middle and leg, then turning outwards, and batsman circumspect playing it back to the ball, won't be any run. 60 for 3 over number 9 in progress. Last ball coming up, he has conceded 11 and picked up a wicket. Last ball of his third over. Shahbaz comes and bows, flighty trajectory once again, but straight to Amir Surma there, no run. It's 60 for 3, 9 done. The news from the Suntrays, Holiday Cafe batting first. They're 60 for the loss of 3 after 9 overs. The 2 batters out in the middle is Ramiz and Sohail. And this broadcast is brought to you by Arco Fenestration, Anthem Supports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pampur, and MHM multi-fashion branded store. Well, Shabir, the only man who got to 30s, and apart from him, there is no guy who manages to get into the double figures, and that is the bad story, and that is a kind of a flop show from other batters out in the middle. जी बिल्कुल, और 9 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट गंवाए हैं 60 रन पे। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अच्छी गेंद, हालांकि निचले सिरे पे लगने के बाद वही पास पे लुढ़की बगैर किसी रन के। 9.1 ओवर की गेंदबाजी, 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और यह पारी का 10वां ओवर प्रगति पर है। सामने वाले शॉट से एक बार फिर ये गेंद, और इस बार बैकफुट पे जाकर उसको मोड़ा जरूर। 1 रन पूरा कर रहे हैं, 1 रन के साथ ही दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे। लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां क्षेत्ररक्षण को, जब तक फील्ड करते 2 रन और खाते में जुड़ते हुए, और कुल योग पहुंचाया 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9.2 के बाद। सोहेल और रमीज की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, हालांकि जिस प्रकार से शुरुआत आज हो चली थी शब्बीर और आदिल काचरू द्वारा, तो ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी, 3 विकेट गिरने के बाद इसमें रनों की गति पे विराम लगता हुआ। इस ओवर में अगली बार, और इस बार ऑफिस नंबर जगह दी, मारना चाहते थे, सफल नहीं हुए, और गेंद ने किया विराम विकेट कीपर के दस्ताने में। 9.4 ओवर हो चुके हैं, 62 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और स्वागत करना चाहेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोग इस मुकाबले का आनंद ले सके। 63 पे 3, 9.5 के बाद आकर्षक मुकाबला। रमीज 4 और सोहेल 9। 63 for the loss of 3. Riaz Mali continues to bowl, has conceded 7 runs. He's in his over number 2. This is over number 10 we are in, with the fly slip in place, then followed by Gully, then followed by backward point
After point, there is sweeper cover in place. Short extra cover mid off. Wide-ish in place. And long on the boundary. Mid-wicket drops down to the boundary. Hashim Watson is there. And backward sculling in place. Riaz Mahdi will bowl the next ball. 64 for 3. Over number 10 in pro. Last ball. And he shuffles across. Playing it back to the ball. Won't be any run. 10 done. 64 for 3. At the halfway stage, Nazir, Holiday Cafe, their last 3 wickets. They were going all guns blazing. They targeted and they attacked Abid Nabi, to be precise, up front. But soon after, fall of 1 wicket in the form of Adil Kachru, the confidence were dented to larger extent. And Asghar Baba, Udair Shabir and Ejaz Khan, thank you all the beloved viewers. Thank you for joining us this afternoon on JK Sports Time. It's your love, it's your sport which adds a kind of fuel to our tank to continue our services. And it provokes us to render our service time and again for all our beloved viewers on JK Sports Time. Well, Sohail is in, he's on 9 and his colleague Ramiz is on 5. Score is 64 for 3 after 10 overs. Well, Nazir, what do you think? At the halfway stage, 64 for 3 with 10 overs to go. What kind of a score you are seeing and you are watching from your level? What's going on in your mind and what are your comments? What do you think? What will be the safe score and what will be the target in their eyes at this crucial juncture? I'm talking of the team Holiday Cafe. जी बिल्कुल, अगर इस मुकाबले की बात करें, हालांकि आधी पारी समाप्त हो चुकी है और 10 ओवर की समाप्ति पे 64 3 विकेट के नुकसान पर। और अगर लक्ष्य की बात करें, हालांकि आधा जो सफर तय कर लिया है, आधे ओवर बाकी बचे हैं, 10 ओवर का आना बाकी है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि विकेट यदि सुरक्षित रखते हैं तो आने वाले समय में काफी अच्छा कहा जा सकता है हॉलिडे कैफे के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम कुल योग की बात करें तो मैं समझता हूँ 170 180 का लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर विपक्षी टीम की बात करें, बहुत ही बड़े दिग्गज खिलाड़ी है इस मुकाबले में खेलते हुए। Exactly, you're right. They need runs to put on the board. But look at this very tournament, Caribbean Cricket League. This has really brought something new to the reckoning of the valley and all the beloved viewers of the valley, that Shahbaz Ahmed, an IPL sensation, is playing here at the Centre today for Team Hooker. And Team Hooker has got Adil Border in their playing 11. Amir Surma is there. There is Abid Nabi in their lineup. There is Shahbaz Ahmed. So you can understand what kind of a big match this is. This is an high voltage encounter. And don't fade away, don't go anywhere, come back. I promise you, a big match worthy of this very fight, where you can see the stars of the valley. Under 19 star, he has represented India at under 19 level, Abid Nabi. And look at this man, Shahbaz Ahmed. He has been the wonderful and sensational all-rounder there in IPL, played for Royal Challengers Bengaluru. And apart from that, you can see other side, they got Adil Kachru and others. So this is a big match. Don't go anywhere, don't fade away, come back. We have a game on here at the Centre. जी बिल्कुल, और 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस समय पानी का विश्राम चल रहा है और स्थिति यह है कि 10 ओवर में 64 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सोहेल और रमीज की जोड़ी बीच मैदान में। सोहेल 9 पे नाबाद 15 गेंदों का सामना किया और रमीज की बात करें 5 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। वर्तमान रन गति 6.40। और अगर यहां से बात करें, हालांकि शहबाज अहमद जो इस मुकाबले में खेल रहे हैं टीम हुकर श्रीनगर की ओर से 3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं। एक सफलता उनके हाथ जरूर लगी है। बेहतरीन लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेले हैं। और कहना चाहिए कि आकर्षक और राष्ट्रीय स्तर का जो अनुभव है वो इस समय बीच मैदान में छलकता हुआ जुड़े रहिए हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम, जो कि सीधा प्रसारण इस खूबसूरत ऐतिहासिक अमर सिंह क्रिकेट स्टेडियम से आप तक पहुंचा रहा है। और कहीं जाइएगा नहीं। सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे और बहुत बहुत आभारी रहेंगे जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार हमारे साथ साझा करते हुए। आरजे आबिद, वसीम शाह और इफ्तिखार रशीद चौधरी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। रोजेब राशिद के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आबिद मंजूर भी हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूअर्स का इस मुकाबले में हमारे साथ बने रहने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है और इसी तरीके से अपना प्यार और विचार देते रहिए। सिकंदर डार अपना विचार देते हुए और भट्ट जावी के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। आकर्षक मुकाबला है इस समय बीच मैदान में। हालांकि आपको याद होगा लगातार हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि शहबाज अहमद जो कि आईपीएल की ओर से आईपीएल में खेलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से, और वो इस मुकाबले में टीम हुकर श्रीनगर की ओर से खेलते हैं। 3 ओवर की गेंदबाजी वो कर चुके हैं। कहना चाहिए आकर्षक और लाजवाब प्रदर्शन। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, आदिल काचरू इस मुकाबले में खेले, हालांकि वे आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। और जिस प्रकार से आदिल बॉर्डर इस मुकाबले में खेल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं। अगर दूसरी विपक्षी टीम की भी बात करें, हाफिज खान, डार नदीम के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत
स्वागत सोहेल और मलिक सब्जार, शाहनवाज वानी, बासित शब्बीर, जुनैदुल इस्लाम के साथ बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूवर्स का हमारे साथ बने रहने के लिए। एन नबास अहमद अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत आभारी। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पूरी कमेंट्री टीम टेक्निकल सहयोग द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए और इस सीधे प्रसारण को शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग इस मुकाबले का आनंद ले सकें। और बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में खेल रहे हैं। आपको याद होगा शहबाज अहमद जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और वो इस मुकाबले में अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए टीम होकड श्रीनगर के लिए। मुआरफत हुसैन वानी आरजे आबिद के साथ आदि आदि और नसीर अहमद वानी जहांगीर के साथ हमारे साथ बने हुए। मीर आगे बार शुरुआत होती हुई नए ओवर की पहली गेंद पे खेला, हालांकि एक रन पूरा कर लिया और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65, 3 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रमीज और सोहेल की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। और अगर हम बात करें तो तारिफ है गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर ये गेंद जगह दी, ऑफ स्टंप पर खेला, पीछे खिलाड़ी शानदार क्षेत्र रक्षा, निश्चित तौर पे यहाँ पे एक सीधा स्टंप्स पे थ्रो लगा, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया और एक रन और खाते में जोड़ता हुआ लगातार प्रयास होते हुए 66 हो गया है कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर, क्षमा कीजिएगा 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। संयम आत्मविश्वास के साथ यहां से बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। रईस शेख हमारे साथ जोनी जुनैद के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए शेख बिलाल के साथ। धन्यवाद सभी व्यूवर्स का और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार और अपनी सूचनाएं हम तक पहुंचाते रहिए और कहीं पर भी जिस प्रकार से भी आपके विचार होंगे जेके स्पोर्ट्स टीम आपका अभिनंदन करती हुई। 11वां ओवर में प्रगति पर 66 पे 3, 10.2 के बाद ये गेंद और इस बार हल्के से सिर्फ गेंद के आने का इंतजार किया, अंतिम समय में सिर्फ दिशा भर दे दी और जब तक उसको फील्ड किया जाता एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और कुल योग का पहुंचा 67, 3 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। एस निसार साहिल के साथ शाकिर फारूक भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूवर्स का। मुश्ताक अहमद और बहुत बहुत स्वागत व्यूवर्स का करना चाहेंगे। अगली गेंद को उठा दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन 10.3 के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। टीम होकड श्रीनगर की भिड़ंत इस समय हॉलीडे कैफे के साथ होती है और आपको बताता चलूं कि हॉलीडे कैफे टॉस जीतकर पहले इस निर्णायक मुकाबले में बल्लेबाजी करती हुई। Thank you, Nazir. 71 for 3. We are in over number 11. 4 balls done in over number 11. Score is 71 for the loss of 3. The two batters out in the middle is Sohail alongside him Ramiz and Ehsanul Qureshi. Thank you, Sahil Hossain, Haider Ali and Jahangir John. And this time Dinaraj will get a single nonetheless. For that, nothing short, and that yielded a single. Score moves to 72 for 3. We are in over number 11 of the match. Two fours and 4 sixes and few extras to be precise as of now. Over number 11 in prayer. Next one worked away, nicely done. Help us that one all the way down towards the back. Chris Keller will get a single. That's all he will get out of it. Score moves to 73 for 3. We are in over number 11. We are in over number 11 of the match. The two umpires of the match, Rauf Ahmed alongside his colleague Akib. These are the two umpires who are officiating this wonderful match. Remember, once again I will throw it out that today's big match, and the big player, the big gun who's operating here in this very match is Shehbaz Ahmed, the man who's playing for Royal Challengers Bangalore. He has made his way out to the centre and he is representing Team Hooked for this all important big battle here at the centre, which is going on between Holiday Cafe and Team Hooked. In the meantime, fresh over is about to start. We'll have to wait and watch who's gonna come in and bowl over number 12 of the match. 73 for 3. It's gonna be shaky and cloudy out here at the centre, but we would definitely love to see such kind of weather and atmosphere out here at the centre. Abid Nabi, another star of the valley, is at first slip, then followed by backward point, straightish point, short execable, wideish mid-off, mid-on on the boundary, mid-wicket on the boundary, Skellig on the boundary. Next ball coming up, short one outside the up stump, cuts that one, will beat the sweeper cover down to the cover point boundary for more runs. The fresh over begins with the boundary. It was there to be put away, so does the batsman. Executed it to perfection, nicely done.
Superb cut of the back foot, and that yielded a boundary. 77 for the loss of 3 over number 12 in progress. You can send in the digital stars, and we're eagerly waiting for your love and sport. And those who sent us the stars, we're really thankful. Oh, another one! It's back-to-back boundaries on the trot. 2 back-to-back boundaries, and it is Adil Border is operating, and Abid Nabi isn't happy with his with this man, and he's exercising his lips and giving pep talk to Adil Border how to operate and how to bowl to this man. Ramiz, back-to-back boundaries, score propelled to 81 for 3 over number 12 in progress. Next ball coming up with one slip in place. Oh, that's a good delivery. That is a good delivery. He followed the batsman. He saw the batsman charging down the track, and he wanted to give himself room, and he saw the batsman, followed him and bowled that wonderful delivery. Well, Gulzar Ahmed, Supports Association Tarzo, Educate Hilal and Mir Hassan, Rahman Cup Undergam and Tarek Maknu, MKT chairman, are also watching this wonderful coverage coming your way from the center of Amar Singh College, Srinagar. We are really thankful to all the beloved viewers, whosoever, he or she. We are really thankful to all the beloved viewers on JK Sports Time, and keep joining us in the partnership with moves 33 of 31 balls. Another beautiful partnership growing up a bit at this very crucial juncture. Nazir. जी बिल्कुल, और लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन इस समय एक सजदारी पर कदमों का इस्तेमाल, गेंद को उठाया, नीचे है खिलाड़ी लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और निकल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता 89, 3 विकेट के नुकसान पर 11.5 के बाद रमीज जो कि टीम के कप्तान हैं, इस समय 18 पे नाबाद 17 गेंदों का सामना किया, और उनका साथ देते हुए सुहेल जो कि 15 पे नाबाद 18 गेंदों का सामना किया। आदिल है गेंदबाज। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ, और लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे, आभारी। और उनके चलते ही जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार हमें देते हुए, हमारा मनोबल बढ़ाते हुए, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह सीधा प्रसारण उन तक पहुंचता हुआ, इसी प्रकार से बने रहिए, अपना प्यार और विचार देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि इस बेहतरीन, खूबसूरत और विश्वसनीय मुकाबले का आनंद ले सके। इस ओवर में अगली बार इस बार फिर जगह दे, मोड़ा उसको, पीछे है खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक चहलकदमी करते हुए 1 रन और लगातार स्कोरबोर्ड को इसमें गतिशील रखते हुए अच्छी रणनीति। 90 हो गया है कुल योग, 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर संभवतः पूरे होने को है। हालांकि आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता है, और काफी कुछ निर्भर करेगा टीम रमीज के ऊपर, जो कि हॉलीडे कैफे टीम के कप्तान है, और एक कप्तानी पारी खेलनी होगी, ये देखते हुए कि अगर विपक्षी टीम की बात की जाए, दिग्गज बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं 170-180 रन का लक्ष्य जो होगा वे संभवतः इस मुकाबले में रखना होगा, यदि इस मुकाबले को यहां से जीतना चाहें तो। Well, you're absolutely right. They need runs. They need to put on and pile up a big score. Pressure begins. The left arm spinner once again comes on the ball. That's one. Oh, capped out toward the back foot. A point. Adil Border missed the ball, and he couldn't stop that one clearly, and allowed the 2 batters to fetch another single. 91 for 3 over number 13 in progress. Next ball coming up. It is Tyrus operating from the far end. And we can also call this variant Amar Singh College. And second ball coming up. Comes and goes. That's in the air. And that's gone. Lambosted. Skyer. And that is a towering below. Gone all the way. Almost pyros back into that portion. 6 more. And that has yielded a huge hit. Half a dozen. 97 Nazir for the loss of 3. We are in over number 13. जी बिल्कुल, और जैसे ही गेंद उनकी रडार में मिली और उसको उठा दिया, और गेंद सीमा रेखा से बाहर कहना चाहिए, दर्शक बीरगांव में जा लगे हैं 6 रनों के लिए। आकर्षक का मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ, और कहना चाहिए 97 रन कुल योग हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर 12.2 के बाद। पारी का 13वां ओवर इसमें प्रगति पर, और गेंदबाजी का दायित्व तारिफ के पास, और वहीं पे बल्लेबाजी की बात की जाए टीम के कप्तान रमीज इस समय एक आकर्षक और विश्वसनीय पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं कि बड़ा स्कोर खड़ा करना, और ऐसे में उसी शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। इस बार लेग स्टंप पर मोड़ा, हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं। विकेट कीपर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी जब तक उसको फील्ड किया जाता। स्वाभाविक तौर पर वहां पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया, और 2 रनों के साथ ही कुल योग पहुंचाया 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 के बाद। वर्तमान रन गति की बात करें 7.86, और आकर्षक मुकाबला है इस समय। जिस प्रकार से टीम के कप्तान हॉलीडे कैफे की बात की जाए, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, और अंत तक रहना होगा यदि इस मुकाबले में बने रहना है तो। इस ओवर में अगली बार बाएं हाथ से
ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह दी, हालांकि हल्के से उसको प्लेस जरूर किया था लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए। Well, Partnership Earth moves 51 of 37 balls, and this is where they started operating and they started all guns blazing. Partnership. जी बिल्कुल, और एक अच्छी साझेदारी बीच में विकेट में बनती हुई अगली गेंद को जगह मिली और निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इसके साथ ही 100 रन पूरे, 103 3 विकेट के नुकसान पर 12.5 के भेद। और क्या कहना इन दोनों बल्लेबाजों का, जिस प्रकार से कहना चाहिए कि आकर्षक बल्लेबाजी और पूरी तरह से इस समय कहना चाहिए एक शानदार विश्वसनीय प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और इसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि शुरुआती ओवर्स में यदि आप 3 विकेट गंवा सकते हैं तो ऐसे में परिस्थितियां ऐसी थी कि यहां से पारी खेले और कप्तानी भरी पारी, जितनी भी प्रशंसा की जाए वहां पर रमीज की उतनी कम। 103 for 3. Next ball that has been launched all the way. Good ball. 6 more and someone catches that one in the crowd. And look at that young fella, young birdie, a student of Emerson College, I think so, holds on to the ball. Some catching practice, it takes some catching practice. And look at that man who holds on to the ball. But that's gone beyond the boundary. And that is 6 more, 109 for 3. We are in over number. We are going to be in over number 14. 13 done, 109 for the loss of 3. So Sohail Yusuf Hassel and Farid Turk and others are watching. Thank you for your love and support. It is Batriyaz and Zubair Feroz and Masood Kande and others are watching. Well, Nazir, Holiday Cafe batting first for all our beloved viewers and for all the late tuners. We care for you guys. Don't worry. Those who want to know what has happened and what has gone their way, and those who didn't watch this very match, those who didn't follow this very match from the very word go, from the very ball one, the news from the Sunday, the very vital toss won by Holiday Cafe, and their captain decided to bat first. They're 109 for 3, and those who are dropping in their invaluable comments, we are really thankful to your invaluable comments. And don't say that who and he, it doesn't matter, and who's or all doesn't matter. What matters in the end is the game of glorious uncertainties and how it is being played. Back to the bowler, regulation catch, 4th one bites the dust. Nazir once again, commentators curse, and there goes wicket number 4. जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। इस बार गेंद को खेला सीधे बल्ले से और वहां पर कैच को लपक लिया अपने ही फॉलो थ्रो में, चौथे विकेट को किया चलता 109 पे 4, 13.1 के बाद। और कहना चाहिए कि एक आकर्षक और रोमांचक स्थिति, हालांकि धीरे धीरे एक साझेदारी पनप रही थी और एकदम से बल्लेबाज की एकाग्रता भंग हुई और चौथा विकेट का पतन होता हुआ यहां पर हॉलिडे कैफे का बेहतरीन लाजवाब और विश्वसनीय प्रदर्शन। और इसमें घेरे में खड़ी टीम होकर श्रीनगर की टीम। Well, I'm astonished to know that somebody writes in what is the score, and score is displayed on your screen, gentlemen. Yeah, just go through that. It's mentioned in the ribbon. You can see that 109 on the board for the loss of 4. Once again, commentators curse, but they have been able to pull things back. And once again, they've been able to dent the confidence of the batters. And credit must be given to the team hooker, the way they're showing their class. And that's why experience comes handy. And experience does what happened on that delivery. And that's all the experience. And that has set the tone for a big match on the way here at the center. But we would definitely love to thank all the beloved viewers who join us time and again on JK Sports Time. Thank you, Bat Nasir and others, for your love through digital stars to JK Sports Time. And today's match, we are witnessing a star from RCB Royal Challengers Bengaluru side, namely Shehbaz Ahmed is playing today's match. He has really been phenomenal with the ball. He has picked up a wicket and has just conceded 11 of his 3 overs and has hold on to a blinder of a catch at first slip, and that was a